So this is Smart 7 from Infinix और बताते हैं आपको द हाई पॉइंट ऑफ द स्मार्टफोन इज़ द बैटरी जो कि है 6000 mAh की. जी हाँ, इट्स कॉल्ड द बिग बैटरी हियर एंड दिस इज़ द यूएसपी ऑफ दिस फ़ोन. और आपको बता दें कि आज भारत में लॉन्च हुआ है ये 7,299 रुपये यानी 7,299 फॉर 4GB एंड 64GB ऑफ रैम. February 27 से आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे. लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस एंड शो यू व्हाट्स देयर इनसाइड द बॉक्स. That's the phone. Very quickly we have the booklet here, which apparently nobody reads, the user manual also. आपको अडेप्टर दिया गया है, द चार्जिंग अडेप्टर, एंड लेट मी टेल यू दैट द चार्जिंग अडेप्टर हियर चार्जेस द 6000 mAh बैटरी जो कि 10 वॉट का है और टाइप सी जो है चार्जिंग पोर्ट दिया गया है इसमें. एंड वी हैव द कवर हियर, a transparent cover which looks quite chic, and the SIM ejector. So this is all what we have. और आपको बता दें कि USB जो है इस फ़ोन की वो है the 6000 mAh battery. This is all what you get inside the box, and let's just quickly come to the phone and tell you all about it. So this is the phone, and quickly see. There you go. Wow, looks pretty fancy. बहुत ही stylish design है. Let's just take this off. और ये देखिए, ये पैटर्न आप देख सकते हैं. लाइक इवन इफ आई एम टचिंग इट आई कैन फील इट. इट्स नॉट एम्बेडेड, इट्स एक्चुअली प्रोट्यूडिंग. और एक तरह से बैक जो है वेव पैटर्न का डिज़ाइन दिया गया है. देयर इज अ वेव हियर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड द कलर फ्रॉम द लाइट गेट्स अ डार्कर शेड ऑफ ब्लू. कैमरा मॉड्यूल यहाँ दिया गया है, लुक्स प्रीटी फैंसी. 2 बड़े कैमरे दिए गए हैं जैसे आप देख सकते हैं विद द फ्लैश, एंड पीछे आप देख सकते हैं there is a fingerprint sensor. ये आप देख सकते हैं फ्रंट है. the phone is quite thick, it's not thin. and नीचे की तरफ आप देखेंगे there is a single speaker with type C port and a 3.5 mm headphone jack. the back camera we showed you. टॉप में यहाँ कुछ नहीं है. इधर आपको सिम ट्रे दी गई है. यहाँ पे पावर बटन विद वॉल्यूम रॉकर. नाउ लेट्स जस्ट क्विकली ओपन द सिम ट्रे एंड सी व्हाट्स द कॉन्फ़िगरेशन गिवन हियर. स्टोरेज आपको बताया हमने 4GB रैम दी गई है विद 3GB ऑफ वर्चुअल रैम एंड 64GB ऑफ internal storage, and you can see that it has a micro SD slot also, which means that the memory is of course expandable. It's a dual SIM phone. Now let's just get started with what are the other things that we have, and also a drop notch front camera. ये फ़ोन स्टार्ट हो रहा है. उससे पहले आपको बता दें कि ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, अजूर ब्लू, emerald green and night black. This is the azure blue, the color that we have, and the pattern is pretty good. Phone काफ़ी हल्का है, it's not heavy at all. So you could see the display here. The display is about 6.6 IPS LCD with the HD plus screen, and the resolution is 16:12:720p. और आपको बता दें कि ये जो है XOS UI पे चलता है, and Android 12 is the software that it's running. So you see we've just started the phone. कुछ इस तरह का डिस्प्ले आप देख सकते हैं. द फोन इज़ वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड. इट्स जस्ट अ लिटिल बल्की, बट जिस हिसाब से इसका आप बल्क देख सकते हैं इट्स नॉट दैट हैवी. सो दैट इज़ अ प्रीटी गुड थिंग अबाउट इट. बट बहुत ही स्टर्डी है और हाथ में भी काफ़ी अच्छा फील आ रहा है इसको पकड़ के. इट्स जस्ट नॉट हैवी, सो यू कैन यूज़ इट फॉर एवरी डे पर्पस. दिस इज़ हाउ द अदर एप्स आर हियर. थोड़ा सा हमें ब्लोटवेयर लग रहा है, बट आई थिंक वी विल बी एबल टू रिमूव इट इफ इन केस वी वांट टू. So it's not that problematic as such. Coming on to the software, like we told you, this works on the Android 12. Processor की बात करें तो आपको बता दें that Unisoc SC9863AI is the processor जिस पे ये चलता है.
You could see the processor name here as well. And also what we want to tell you was the cameras. जी हाँ, कैमरा की बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं the dual camera. So the dual camera is 13 megapixel plus 2 megapixel. The secondary sensor is 2 megapixel. You have LED flash here, so you can have good pictures in the night as well. We'll talk about the front camera. It is 5 megapixel. We'll review the phone and let you know how the pictures fare. So all in all, this is a super budget smartphone from Infinix. So obviously आप कुछ wow features इनसे नहीं expect कर पा रहे हैं, but in terms of design, it's pretty impressive. So this is something very different what Infinix has launched. They've been launching the Smart Series. They have launched the Smart Series earlier as well. So this is a different edition altogether. You've not seen such design in Infinix series ever, with this kind of broad squarish chocolate design, which apparently is my favorite. बात करें competition की तो this straight away competes with Poco C50, Redmi 8 I and Tecno का जो Pop 7 Pro है उसके साथ भी ये compete करता है in terms of features and the price. So this is how it looks. We also have a back cover. Very less companies now are giving a back cover with the phone, so this is a pretty good thing here. So at 7,299, 7,299 रुपये में आपको ये फ़ोन मिलेगा. Slightly slow here while I'm using it, but I'm not really sure about it because I've just switched on the phone, so it might just take some time to optimize. But otherwise, overall, the phone looks quite good with the price bracket that it's launched on. तो 27 फरवरी से आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे और आपको बता दें कीमत 7,299 रुपये. और क्या देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखिए. Trends9 को सब्सक्राइब ज़रूर करें. दिस इज श्रुति साइनिंग ऑफ.